नमस्ते, हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन आप सब व्यूवर्स का, लर्नेड व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल एजर्टिव आयुर्वेदा पर। आज आपको बैकग्राउंड कुछ अलग दिख रही होगी, तो इसका भी रीजन मैं स्पष्ट कर दूं कि टुडे आई एम इन माय चैम्बर, माय वर्किंग प्लेस, द डिपार्टमेंट ऑफ रसशास्त्र एंड प्रोसेस कल्पना। आफ्टर 51 days, I am in my chamber. Whatever the other shootings were taking place, they were from my residence. So I welcome myself in my chamber, and as well as I welcome you too through this YouTube in my chamber. Fine. So under the column of the brush the bushes, I thought to raise two issues today, and both are published into the special edition of the Indian Express, the magazine I, which is available on every Sunday. And this is what I have gone through yesterday, both write-ups, and I thought why not I should interact with you all for awareness as well as for precautions. On the last page of the I magazine, two stories. One of the young boy of the 23 year who was suffering with the hypertension, and after getting some symptoms of the headache etc., he just took some medications from one allopathic doctor. He got relieved. Then on consultation on advice of some of his relative, he consulted in Meerut one herbalist. Indian Express is not disclosing that that herbalist was what. वो हर्बलिस्ट आयुर्वेदिक चिकित्सक है, या वो हर्बलिस्ट यूनानी चिकित्सक है, या वो हर्बलिस्ट किस परंपरा का चिकित्सक है। ठीक है, पूरी स्टोरी में इंडियन एक्सप्रेस ने हर्बलिस्ट नाम दिया है, 2-3 बार उसका कोट आया है। तो उन्होंने बताया कि उस हर्बलिस्ट ने उनको कुछ पाउडर्स दिए, कुछ टैबलेट्स दिए हर्बल ओरिजिन के। उस यंग बॉय ने खाया, वो ठीक हो गया। फिर उसको 3-4 महीने के बाद उसको फिर वही सिम्टम्स आने लगे, बुखार आने लगा, शरीर में दर्द होने लगा। तो फिर वो गया उसी मेरठ स्थित हर्बलिस्ट के पास। मैं समझता हूँ कि हर्बलिस्ट आयुर्वेद चिकित्सक ही होंगे, तो ठीक है, वो गए हर्बलिस्ट के पास। जो इंडियन एक्सप्रेस ने टर्म यूज किया है वही टर्म मैं भी यूज करूँगा। और उस हर्बलिस्ट ने उनको फिर दवा दी और वो ठीक हो गए। फिर से 5-6 महीने के बाद उनको कुछ परेशानी हुई और उन्होंने इधर एलोपैथिक दवा खानी बंद कर दी थी। फिर उनको कुछ परेशानी हुई तो फिर उसके पास गए, तो उस हर्बलिस्ट ने उनका सीरम क्रिएटिनिन कराया और सीरम क्रिएटिनिन उनका 7.1 आया। तो उस हर्बलिस्ट ने उनको एडवाइस किया कि आप जो है अब किसी मॉडर्न डॉक्टर के पास जाइए और अपना देखिए कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों और ये आपको परेशानियाँ कैसे हो रही हैं, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। तो जब वो बच्चा, नेमली उसके नाम से स्टोरी निकली हुई है, अमन यादव नाम है उसका, वो फिर 40s में गया। तो 40s में गया तो पता चला कि किडनी हैज गॉन, और किडनी हैज गॉन। फिर उसको उसका क्रिएटिनिन 27-28 तक पहुंचता रहा। फिर बहुत सीरियसली वो आईसीयू में एडमिट हुआ और लेटर ऑन सारे इन्वेस्टिगेशंस होते करने के बाद अंत में एक ही रास्ता बचा था कि उसका किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता। और फिर उसका डोनर उसकी मदर निकली और मदर से मैच करा करके उसका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया और बच्चा इस समय
प्रिकॉशनरी लेकर के अपने फैमिली बिजनेस को जो उसका ट्रेवल का है, ही लॉस्ट हिज फादर एज वेल एज हिज एल्डर ब्रदर. That much information was available in that story of the Indian Express. So why I am quoting this? With the two reasons. One reason, that was a so fair journalism. I appreciate this fair journalism. Nowhere in that story the journalist had blamed that this kidney problem was originated due to the herbal treatment. Otherwise, there is a all-time yellow journalism. If anything is happening to the specifically to the kidney, then there is a headline that this patient previously had taken some medication with some herbalist or this traditional medicine practitioners, and kidney was damaged. But the appreciable point of this whole story of the Indian Express is that nowhere it was blamed, not in a single word, that herbalist or his medicines of natural origin is responsible for the damage of the kidney of the patient. The whole story is for the one reason only, to make awareness. And that I am quoting before you what the head of the department of the Fortis said. And there was a quotation that if you have a hypertension, then people are having habit to rush to the cardiologist. But that write-up is suggesting, this story is suggesting, if anyone is having persistent hypertension, first rush to the nephrologist and then go to the cardiologist. This is the only message for which I am with you to make this awareness. And really it appeals me, this sentence appeals me. कि यदि हमको हाइपरटेंशन होता है तो हमें सबको ही हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन एज वेल एज हमको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भी जाना चाहिए. क्योंकि उस बच्चे का जो स्टोरी दी हुई है उसमें ये साफ था कि उसको जो हाइपरटेंशन रह रहा था उसमें किडनी डिसऑर्डर्स जिम्मेदार थे, कुछ नेफ्रोलॉजिकल इटियोलॉजी थी, दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर द परसिस्टेंट हाइपरटेंशन. और हाइपरटेंशन में जनरली भी ये देखा जाता है कि किडनी के ऊपर बहुत इफेक्ट आता है, एंड इट्स सुपर इट इज नोन एज अ silent killer. So yesterday's story of the Indian Express is making this particular message to the society, thanking to the Indian Express and that particular journalist. I forgotten to take that issue of the print media of the journalist, I mean Indian Express. And here in the Google search I am getting a lot about the particular story, but this is in a different way, Hope so you got my message, my request, my submission to you. And once again I'm thanking to this board that they have not blamed at a single line that this herbal medicine are responsible for the kidney damage. They did a very fair journalism, and they have given a due respect to that herbalist and his treatment, and finally the whole course of the order. Next story is really very interesting, and that is about artificial sweeteners and what the artificial sweeteners can do to us. It is really a matter of concern. And that story was about the aspartame. What aspartame is doing when the people are taking
artificial sweeteners either in tea, coffee, or in soda drink, or the coke, or the cola drink, or whatsoever the things are there. If anyone has been diagnosed diabetic, then try to develop this habit that not get sweets. I myself is, I can say, chronic diabetic since last 15 years. Everywhere I was being asked this pills, artificial sweetener pills. I have never taken. फीकी चाय पीनी है, मिठाई नहीं खानी है, और ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, फिर भी डायबिटीज के अपने दुष्प्रभाव है और वो मेरे ऊपर भी पड़े हैं, सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी। तो मैं ये जो कहना चाहता हूँ आज सोसाइटी में आप सबसे, कि ये स्वीटनेस के आर्टिफिशियल पिल्स लेने के पीछे उसमें 4 एक्सपर्ट्स के रिव्यूज दिए हुए हैं और WHO का भी रेफरेंस है कि एस्पेरेटम के लिए क्या करना चाहिए। चारों एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि उनको तमाम शोध करने के बाद, इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च, ये उनको एविडेंस नहीं मिल रहा है कि ये नॉर्मल कोर्स में, नॉर्मल डोज लेने में ये कार्सिनोजेनिक है। But there are some reports published about this, कि this asparatum is carcinogenic. Now, the whole, see, I always speak in this language, that whole business model, the whole corporate business model, the involvement of the dollar in this particular sector of the sweeteners, right? They are getting statements of the several leading researchers, and I said four have given that they have, it is not serious, it is not point of worry if you are taking artificial sweeteners daily in your life and in your routines, but its dose and duration is important. I do agree with this, बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ इससे। अभी मेरे पास एक नहीं, अभी पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, फिर लास्ट में ये बात बोलूँगा। तो उसमें ये दिया हुआ है कि हम 2 पिल लेते हैं या 2 पिल डालते हैं और पूरी डोज कैलकुलेट की हुई है, तो कहा गया है कि अगर आप 100 पिल भी डेली ले तब जाकर के ये एक्सेस डोज में जाता है, 0.2 पर बॉडी वेट के हिसाब से, 0.2 mg पर बॉडी वेट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर अपने सभी शुभचिंतकों को, अपने दर्शकों को, व्यूवर्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छा है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं लीजिए। जीवन में मीठा बहुत खा लिया, और मत खाइए। मीठा बोलिए, मधुर व्यवहार करिए। अरे जब स्वीट खाना था तो हम लोगों ने स्वीट खाया, मैं भी था उसी में। अब नहीं खाना है, स्वास्थ्य कहता है कि नहीं, आपको मधुर द्रव्य नहीं लेने हैं, स्वीट्स नहीं लेनी है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस क्यों लेना? और फिर अगर आपको नेचुरल स्वीटनेस भी हैं जो कि ब्लड शुगर के ऊपर कम प्रभाव डालते हैं, तो उसमें भी ढेर सारा उस पर डिस्कशन है। अभी मैं बहुत शॉर्ट में चल रहा हूँ क्योंकि 20-25 मिनट से ज़्यादा आप कोई सुनना नहीं चाहता आजकल, तो इसीलिए मुझे इस समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। सैक्रोलोज की बात हो रही है, स्टीविया की बात हो रही है, कुछ लोग हनी की बात कर रहे हैं। हनी में भी बड़ा कंफ्यूजन है कि डायबिटीज के रोगी को, मधुमेह के रोगी को मधु लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और फिर फ्रक्टोज की भी जो वैरायटीज हैं फ्रूट्स में, कि उनमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो इस पर तो फिर कभी किसी और सेशन में चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, आपको ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि एस्पेरेटम, जब एक रिपोर्ट WHO ने कह दिया कि नहीं ये कार्सिनोजेनिक हो सकता है, और कहीं भी कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि हाँ ये कार्सिनोजेनिक हो सकता है, तो ये जो बिजनेस मॉडल है, जो इसमें इकोनॉमी इन्वॉल्व है,
उसने 4-4 5-5 स्टेटमेंट्स काउंटर रिसर्च पेपर्स दिए और वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज दी जा रही है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, कि आप इसका यूज करते हैं। नहीं इतने डोज पे बहुत अच्छा, नहीं नहीं मैंने आज तक ऐसा कभी कोई पेशेंट नहीं देखा, नहीं मेरी क्लिनिक में ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं इतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं इतना वगैरह वगैरह। तो अगर कहीं शंका हो गई, मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने इंटरेक्शंस में पीजी के बीच में कि ये रिसर्च तो ऐसी है, जैसे कि एक संदर्भ आ गया, लेकिन इस पर भी एक सेशन हो सकता है कि यूएसए में अंकल सैम ने सबसे पहले कहा कि घी खाना बंद करो, ये फैक्ट बहुत बेकार चीज है। जब उनकी पॉपुलेशन ने घी खाना बंद किया और उनको अल्जाइमर्स के पेशेंट्स की संख्या बढ़ने लगी और उनको ढेर सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने लगे, तो 20 साल के बाद वही अंकल सैम के रिसर्चर्स कह रहे हैं बी लाइट इन गुड, वही रिसर्चर्स कह रहे हैं कि नहीं दिस घी एंड स्पेसिफिकली काउ घी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी गुड फॉर द all the neurological physiology and one must have ghee in his her diet in a calculated dose. And this was the time 20 year 2 decade back 20 year ago कि no fat, calculate the calorie. And here too now they are advising asparatum as per the calorie. Oh no, it is not uprising the calorie. No, it is it will be broken and not be broken. All these things are under research, or there is some conflict of interest. So it is like that. It is happening every time in this world of the pharmaceuticals. I remember the book Bottles of Lies. Must write it. I mean, must read it. Bottles of Lies. That is the book which is revealing the conspiracies of the all pharma companies, how the treatment of the cancer and how the cost and how the other things they are doing, and I'm not going to, this book is available in the market and you can please read the Bottles of the Lie. Must be in, yeah, it is in my self, it is there, it is here very much. So this story of the asparatum suggested me that I should share with you. Leave this pills. Yes, doctors are saying it is, they have not experiencing anything wrong with the asparatum, but it is the report that asparatum is the carcinogenic, and that is also not from anywhere else, very authentic source. So this is the conflict of interest. Choice is yours. यहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनर खा करके और एक दिन यही रिपोर्ट छापेंगी किसी दिन 20 साल के, आई मीन 10 साल के बाद, ओ दिस इज कार्सिनोजेनिक, withdraw from the market, likewise the antidote. So these things are happening, and so this is all for today. The two stories: one, take care of your hypertension. When you are going to a cardiologist, please visit a nephrologist too. And of course, अगर आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा आप लेते हैं और आपके चिकित्सक सारी रिपोर्ट्स आपकी LFT और RFT सब करा करके रखते हैं, तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस हर्बलिस्ट का जिक्र आ रहा है बार बार इंडियन एक्सप्रेस के कल की स्टोरी में, उनको क्रिएटिनिन शायद पहले भी कराना चाहिए था, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि उसमें कहीं ब्लेम नहीं किया गया है कि उसका किडनी डैमेज उस हर्बल मेडिसिन से हुई। और दूसरा ये एस्पेरेटम का एक कमेंट मुझे कल मिला मैसेज बॉक्स में कि सर स्पीक ओनली इन इंग्लिश बिकॉज वी श्रीलंकन्स आर आल्सो लिसनिंग यू, सो योर all these interaction must be in English only. My Sri Lankan friends, pardon me, मैं मिक्स में ही चलूँगा, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि एकदम से अगर अंग्रेजी की ही बात की जाए तो थोड़ा सा उनको समझने में परेशानी होती है।
आपको अगर कहीं कोई चीज़ हिंदी में मेरे बोलने पर समझ में नहीं आ रही है, सबसे पहले तो मुझे खुशी ये हुई कि आप लोग श्रीलंका में भी मुझे सुन रहे हैं और सारी बातें भारत और श्रीलंका का आयुर्वेद में काफ़ी अच्छा संबंध भी है, कोलंबो यूनिवर्सिटी से और इंडिजिनस इंस्टीट्यूट से, बीएचयू से हो, चाहे वो जामनगर से हो, जयपुर से हो, वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। आई नो मेरी माय सीनियर्स आर देयर in Colombo University. I too have visited Sri Lanka and I have delivered lecture in the Bhandar Naike auditorium in the Colombo and the Kandy both. But the point is this: yes, I shall try to speak in the language which is most understandable to many larger canvas of the population. So I shall try to use maximum the language English, but there will be some Hindi to put. And with this, take care of your health. Go to the nephrologist if you have hypertension with the Ayurvedic chikitsak or the allopathic chikitsak, and be careful about the aspiratum and its uses. Thank you. Thank you everyone. Namaste, Abhinandan, Abhivadan. Thank you.